प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। रोजनी नायडू, मौलाना आज़ाद, मिसेस नायडू के डीसी और मिसेस नायडू की सुपुत्री कुमारी पद्मजा नायडू, रीता और तारा पंडित जो दोनों हमारे साथ 80 स्पेशल में आई हैं, और बाबू पुरुषोत्तम दास टंडन। दूसरी ओर मिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, मिस्टर बिहारी लाल, ये यूपी के मिनिस्टर्स हैं। इतनों को तो मैं देख पा रहा हूँ और भी बहुत से लोग हैं जिन्हें मैं देख नहीं पाता। वेद मंत्रों का पाठ हो रहा है। ये सब कुछ तो है। हम बापू की अस्थियाँ विसर्जन करने आए हैं इलाहाबाद, मगर इलाहाबाद में ही क्यों, प्रयाग में ही क्यों? प्रयाग इतिहास युगों से भी पुराना है। युगों के पद चिन्ह आज भी प्रयाग में शेष हैं, जिनमें हिंदुस्तान की उस उच्चतम सभ्यता के प्रमाण हैं जिनके सामने पाश्चात्य सभ्यता यानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन, साइंस और आर्ट आज भी झुकते हैं। मिसाल के लिए जो सामने किला है, इसमें एक अशोक स्तंभ को ले लीजिए। कितने हजारों वर्ष से ये स्तंभ देखे गए हैं, कभी उन पर जंग लगते नहीं देखी गई। आज की रसायन ने DSLI से लेकर एटम बॉम्ब तक बना डाले हैं। 1 मिनट में सारी दुनिया को भस्म करने योग्य विस्फोटक पदार्थ बनाए हैं, पर वो एक ऐसा लोहा नहीं बना सकी जिस पर जंग न लगे। बापू वही विज्ञान, गौरव और कभी जंग न खाने वाले स्तंभ मांगते थे, बल्कि वो स्वयं भी एक ऐसे ही स्तंभ थे। उनके लेख आज दुनिया आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही है। कल ही तो यूनाइटेड नेशंस में एक प्रस्ताव की चर्चा गर्म थी कि सारे देशों को गांधी के बताए सिद्धांतों पर लाने का क्या आयोजन किया जाए। प्रयाग को अधिकार है गांधी जी के फूलों का, इसलिए कि प्रयाग उस समय का सबसे पवित्र और गौरवशाली नगर था जब सभ्यता भारत की मरूसी थी, और उससे अर्थवादी और बकवादी कीड़ों ने गंदा नहीं किया था। इसलिए बापू के फूल प्रयाग में आने थे। प्रयाग में पुष्प प्रवाह का कुछ महत्व भी है। आप में से बहुतों के हृदयों में ये प्रश्न उठ सकता है कि बापू के पुष्प प्रवाह का मुख्य स्थान प्रयाग क्यों चुना गया। प्रयाग तीर्थराज प्रसिद्ध ही है। प्रयाग के संगम का वर्णन आपने देश के अनेक प्राचीन ग्रंथों में देखा होगा। पहला विस्तृत उल्लेख वाल्मीकि रामायण में है। महाभारत तथा पुराणों में प्रयाग महात्म्य अनेक स्थलों पर मिलता है। संस्कृति प्रेमी रघुवंश के प्रसिद्ध संगम वर्णन के परिचित ही हैं। अनेक पुराणों में प्रयाग में भारत का विशेष फल बताया गया है, और यहाँ पर मृत्यु का भी विशेष फल बताया गया है। इसी विचार से आगे चलकर कदाचित ये भावना विकसित हुई कि संगम में कूद कर प्राण देने से मनुष्य सीधे रुद्रलोक को जाता है। ये प्रथा कुछ समय पूर्व तक प्रचलित थी। इसके उल्लेख अनेक ऐतिहासिक ग्रंथों में भी मिलते हैं। यद्यपि पुराणों में संगम के अस्थि प्रवाह के महत्व के संबंध में विशेष उल्लेख नहीं पाए जाते, किंतु गंगा जी में अस्थि प्रवाह का महत्व अनेक पुराणों में मिलता है, और सनातन काल से हिंदू समाज में ये प्रथा चली आ रही है। इस सिलसिले में मैं आपको एक बात और बता दूं। एक वो कथा जो इतिहासों में मिलती है। महाभारत में सबसे पहला अस्थि प्रवाह किसका हुआ था? सगर के 60,000 पुत्र कपिल ऋषि के शाप में जब भस्म हो गए और उनकी मुक्ति नहीं हो सकी, तो सगर के वंशज महाराज भगीरथ बहुत प्रयत्न से स्वर्ग से मर्तलोक में गंगा जी को उतार कर लाए, और इस तरह सगर के पुत्रों की अस्थियों के गंगा जी के स्पर्श में आने के बाद उनका उद्धार हुआ। जुलूस सामने आ रहा है, इसलिए मैं माइक्रोफोन अब मिस्टर डेमेलो को दे देता हूं। उनसे आप अंग्रेजी में इसका बयान दें। Now, since I last spoke to you, the procession is about to arrive here in the inner enclosure, led by phalanxes of jeeps, followed by armored cars, and I can just see after that the mounted police on white steeds. That's as far as I can see, and the rest is just a mass of moving people and heads, a tremendous throng. There must be about 2 million people here today, and swooping aeroplanes. It's difficult to tell how many, whether there are more hawks in the air than airplanes at the moment. Well, now it's entering the 2 white pillars which have been set up for the occasion at a distance of about 50 yards away from the main white draped platform, and it's nearing the amphibious duck, a white amphibious duck. There goes a plane over my crow's nest, and it's a large one, Viking,
And now I can see, come into full view, the two motorcyclists, two jeeps with guards standing up in them, followed by armored car, two armored cars, and a police lorry behind that, upon which are the principal mourners singing Gandhiji's favorite hymns. As they approach, you will hear them more distinctly. Behind that again, another military truck, and then there's a larger gap with another military truck which is crammed with people on the roof, principal mourners, and behind that, the same again, and now in the distance I can see, just at a distance of about, I should say, a mile, the Rath or chariot bearing the urn carrying the precious and sacred bones of Mahatma Gandhi. And beyond that, just a sea of heads bobbing up and down, moving between here and the fort, the walls of the fort. No road is visible otherwise. Just this last 100 yards of the Bund Road down which the procession is coming. It's moving right towards us, and we're up here in a crow's nest, one of these bamboo platform, bamboo wood structures, about 50 feet in the air, and we are overlooking. We get a back view of the ceremonial platform, white ceremonial platform, about which I told you earlier. Now there comes the first bus, blue bus, with mourners, and now the next one to pass on the left of the white amphibian duck, which will carry the urn, is another military lorry with military officials standing. They form the advance guard, and now right into the wonderful sight, right into the entrance, the two plain white pillars. At the trot come the mounted police with their pennants of blue and red fluttering in the breeze, and red turbans contrasting beautifully with their khaki uniforms and brightly polished jackboots. The first troop are all white steeds, and the second troop chestnuts. Now there's a lull as two lorries with principal mourners are approaching side by side, and in between I can see the white caps of the Royal Indian Navy, marvelous sight, and behind that the green and the floral tributes in the reeds which are decorating the Rath or chariot, upon which I can see now through the haze, through the mist of this morning, I can recognize just by their uniform some of the principal mourners who have taken their position at all four corners of the chariot. And here goes a Viking right over us at this moment, beautiful Viking, and a shower of petals just raining down, massive millions of red petals and cream petals and white petals right over onto this platform here and into this inner cordon. Now here come the two lorries of principal mourners, and the Rath is now well in sight with a large circular archway above the urn, and military personnel and principal mourners, which I can't recognize yet, standing in their plain white khadi shirts on the four corners of the Rath. I'll now pass it over to my colleague. I'll give you a brief description of what preceded Pandit Nehru's speech. जब पंडित नेहरू बोलने खड़े हुए थे तो मैंने आपसे कहा था, उसके बाद पंडित नेहरू ने एक छोटा सा भाषण दिया, सब लोगों ने बड़ी उत्सुकता से उसे सुना, और भाषण खत्म हो चुका है, लोग अब लौटने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसके आगे मुझे आपसे क्या कहना है? अभी थोड़ी देर पहले लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट हुआ था कि लोग एकदम जाने की कोशिश न करें, धीरे धीरे जाएं ताकि सब लोग जा सकें, क्योंकि भीड़ बहुत है और मैं देखता हूँ यहाँ से सामने रास्ता बिल्कुल बंद है। इसलिए अब हम आपको वापस स्टूडियोज़ लिए चलते हैं, और पहले इसके कि मैं इसे ख़त्म करूँ, मिस्टर डेमेलो शायद अपनी कमेंट्री ख़त्म करने के लिए कुछ आखिरी लफ्ज़ कहेंगे। And so it's journey's end for the last mortal remains of Mahatma Gandhi. But before I take my leave,
I would like to say a few fitting words while looking out from this crow's nest over these millions and millions of people who have assembled here to pay their last homage. What were my thoughts when the mortal remains of the great Mahatma were flung into the sacred waters of the Sangam? Well, that's a question I can best answer myself by telling you that my mind went back to Mahatma Gandhi's very own interpretation of death, when he said, "Death is at any time blessed, but it is twice blessed for a warrior who dies for his cause. That is truth." He died for his cause, and in this final act after his death, let us dedicate ourselves afresh to fight and work for the cause for which he fell. It is the cause and not the death which makes the martyr. These sacred waters have taken the bones of a martyr, but his soul is in heaven, and his message will be with us always. As the sacred waters of the Triveni murmur on and on in a lulled, singing tone, my mind also goes back to those wonderful lines by Rabindranath Tagore. He wrote with words of solemn grandeur and a consoling lack of fear. He said, "In one salutation to thee, my God, let all my senses spread out and touch this world at thy feet. Like the rain clouds of July hung low with its burden of unshed showers, let all my mind bend down and touch this world at thy feet. Let all my songs gather together their diverse strains and flow to a sea of silence in one salutation to thee. Like a flock of homesick cranes flying night and day back to their mountain nests, let all my life take its voyage to its eternal home in one salutation to thee." And so this is Melville de Mello saying goodbye from Triveni Sangam.